As promised, Papa Sar is going to showcase his own motorcycle, the number 2 motorcycle. पहले तो हम लोग एक्सपल शोकेस कर चुके थे अपने पिछले वीडियो पे, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं आप, लिंक दे दूंगा मैं. नाउ माय सेकंड मोटरसाइकिल, ओनली 2 मोटरसाइकिल्स और नहीं है. 2019 KTM Duke 790, okay, which I majorly used previously for my Sunday rides, but now I'm using it on track. Accordingly, I'm doing mods to it. Mostly जो मेरे mods है performance based mods हैं अभी. There are some cosmetic mods and more cosmetic mods are coming in, वो भी बताऊंगा. और end में we'll showcase the Acra Povich sound also. Okay, let's start with what mods do I have right now. As I said, there's the Acra slip-on. Then there's a decat pipe also, जो bread box निकाल देता है, which kind of makes it a full system exhaust. Then we have the cowl. We have a cowl behind, which gives it a very cool look. It's a carbon fiber look cowl. असली का carbon fiber नहीं है. All these are from China. Then we have your tail tidy. Most of my motorcycles, I always have tail tidy. Tail tidy make the motorcycle look so much better. Yes, पानी पूरा उछल के ऊपर आता है, but that is something you have to live with. Next performance mod पे आते हैं, which is the RCS 17 Brembo Master Cylinder. ये fake वाला नहीं, जिसमें जो Sting Energy Drink डालते हैं. This is actual RCS 17 Brembo, which I got from US. क्यों मैं किया हूँ ब्रेक मॉड इसमें? क्योंकि the factory braking system that comes on the Duke 790, I didn't like it at all. It does work, but not for my feel. I like that crisp brakes and with a good feedback. Therefore, I changed this. And then also with the Brembo RCS 17, I have the Brembo calipers, M50s. These are Brembo M50 calipers, and it has a sintered pads in it also. Then the major mod will be another is your Fuel-X. There's a Fuel-X which helps with the fueling of the motorcycle basically. Now, I already talked about how Fuel-X works. You can check out my first video on Xpulse. वहाँ पे मैंने बातें की हैं more detail में Fuel-X के ऊपर. And then I also have a free flow air filter in this from KNY, and also a airbox mod for more air to flow in. So most are right now performance mods. और छोटे छोटे मॉड्स में बता देता हूँ मैं. दिस डजंट कम विद अ बाइक. दिस ऑल्सो वी गॉट फ्रॉम चाइना. ये है आपका बैच प्लेट. इट्स गुड टू हैव अ बैच प्लेट, स्पेशली इन इंडिया. देन ऑल्सो वी हैव सैम्को स्पोर्ट रेस पाइप्स, होजेस, नॉट पाइप यूनिंग, होजेस फॉर कूलेंट, बिकॉज जो कंपनी की तरफ से आता है दे आर नॉट दैट ग्रेट. दे लास्ट फॉर फ्यू ईयर्स एंड फटने के चांसेस होते हैं. इट्स बेस्ट टू चेंज देम ऑफ टू अ सैम्को स्पोर्ट होजेस, which we have on this also. Oh, we have one more thing. This is damn cool. This is your light clutch. Oh yeah, it's called a light clutch. It makes the clutch so light. It's like a bloody Duke 390 ka clutch right now with this. We do have bar and mirrors, but they are not that great. They are also China stuff only. They look cool also, but I want to get better set of bar and mirrors in future. What other mods do we have? Obviously we have Evo Tech frame sliders for safety purpose. Major mods will be your Acra, your Brembos. मैं प्राइस नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो घर वाले दौड़ा देंगे मेरे को. आप लोग को अगर जानना है क्या प्राइस है कोई भी स्पेसिफिक पार्ट का, यू कैन ऑलवेज DM मी एंड आई विल लेट यू नो. अब आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में बताओ पापा सर को कितना स्पार्क प्लग मिलेगा या तो गोल्डन स्प्रॉकेट मिलेगा. लेट मी नो. ओके, एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना शोकेस द साउंड ऑफ द Acra. Round and round, the wheels on the bike go round and round, all through the town.